हे गाइस हेलो एवरीवन। कल हमने जावा स्क्रिप्ट आउटपुट, कल नहीं बल्कि हमने परसों पढ़ा था, और हमने कल जावा स्क्रिप्ट आउटपुट में इनर एचटीएमएल पढ़ा था, उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी पढ़ा था। आज डॉक्यूमेंट डॉट राइट पढ़ेंगे हम, और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पढ़ेंगे वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ये भी जेएस आउटपुट का एक मेथड है। जावास्क्रिप्ट आउटपुट के 4 मेथड होते हैं। इनर एचटीएमएल पहला, दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा विंडो डॉट अलर्ट, और फोर्थ कंसोल डॉट लॉग। जिसमें हमने इनर एचटीएमएल पढ़ा, इसके बेनिफिट समझे। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे यूज़ होता है इससे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके बाद फिर हम कल विंडो डॉट अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग एक एक करके देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में जो लिखा हुआ है वो बहुत एक्सप्लेन और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसको समझिए। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दो बार पढ़ूंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनर एचटीएमएल हमने कल देखा था। कल हमने इनर एचटीएमएल देखा था, आज हम देखने वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको एग्जाम्पल के सहित देखा था। ठीक है, सुनिए। Heading level 2 using document dot right paren. For testing purposes, for testing purposes, it is convenient to use document dot right paren, colon. Head for testing purposes, it is convenient to use document dot right paren, colon. Head for testing purposes, it is convenient to use document dot right paren, colon. Head for testing purposes, it is convenient to use document dot right paren, colon. Heading level 3 example. Less than doc type HTML greater. Less HTML greater. Less body greater. Blank. Less H1 greater my first web page less slash H1 greater. Less H1 greater my first web page less slash H1 greater. Less D greater my first paragraph dot less slash D greater. Less D greater my first paragraph dot less slash D greater. Blank. Less script greater. Blank. Less script greater. Less SCRIPT greater. Blank. Less script greater. Document dot right left paren 5 plus 6 right paren semi. Less document dot right left paren 5 plus 6 right paren semi D O C U M E N T dot WRITE left paren 5 space plus space 6 right paren semi right paren 6 space 6 right paren semi line feed less document dot right left paren 5 plus 6 right paren semi less slash script greater dot less slash script greater dot less slash script greater less slash SCRIPT greater line feed
less slash body greater, less slash HTML greater, less slash body greater, less slash HTML greater, link try it yourself double right pointing angle bracket. Less link try it yourself double right pointing angle bracket. Using document dot right paren after an HTML document is loaded, comma, will delete all existing HTML colon. Link using document dot right paren after an HTML document is loaded, comma, will delete all existing HTML colon. Link using document dot right paren after an HTML document is loaded, comma, will delete all existing HTML colon. Heading level 3 example. Less bang doc type HTML greater. Heading less bang doc type HTML greater. Less HTML greater. Less body greater. Blank. Less H1 greater my first web page. Less slash H1 greater. Less B greater my first paragraph. Dot less slash B greater. Less B greater my first paragraph. Dot less slash B greater. Blank. Less button type equals quote button quote on click equals quote document dot right left paren 5 plus 6 right paren quote greater try it less slash button greater blank less button type equals quote button quote on click equals quote document dot right left paren 5 plus 6 right paren quote greater try it less slash button greater blank less button type equals quote button quote on click equals quote document dot right left paren 5 plus 6 right paren quote greater try it less slash less BUDDON space DYPE equal quote BUDD K equals quote equal K less BUDDON space DYPE equals quote BUDDON quote space ONCLICK equals quote DOCUMENT dot WRITE left paren 5 space plus space 6 right paren quote blank less button type equals quote button quote on click equals quote document dot right left paren 5 plus 6 right paren quote greater try it less slash button greater blank less slash body greater less slash HTML greater link try it yourself double right pointing angle bracket. Less link try it yourself double right pointing angle bracket. The document dot right paren link the document dot right paren method should only be used for testing link the document dot right paren method should only be used for testing dot link the document dot right paren method should only be used for testing dot separator advertisement separator heading level 2 using window dot alert left paren right paren. गाइस डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसके लिए यूज़ होते हैं? टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। किसके लिए? टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। वेब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें मैंने बटन ऑन क्लिक टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के साथ भी बताया आपको, और स्क्रिप्ट टैग के साथ भी बताया। ठीक है ना? तो बटन जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट वो किसके लिए? टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही था, HTML स्टैंडर्ड लोड होने के बाद का। और स्क्रिप्ट टैग के साथ भी बताया। इनर HTML किस लिए यूज़ होता है वो भी बताया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे कल? विंडो डॉट अलर्ट। और हमने वेयर टू भी आपको पढ़ाया है। आप वेयर टू को इंटरनेट पे जाके पढ़ लें। उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ाया है JS का, वो भी इंटरनेट से पढ़ लें। और आउटपुट से बहुत सीरियस रहे मेरे साथ। ठीक है, मैंने आउटपुट क्या है, 4 तरह का होता है, HTML डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सब आपको क्लियर कर दिया है। कल हम विंडो डॉट अलर्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।